everyone, welcome back to Notes and Flavors. Today I'm going to tell Class 4, Chapter 2, Jaisa Sawal Vaisa Jawab. Means, however the question is, like that the answer. This story is about Akbar and Birbal. I think you all have heard some stories about Akbar and Birbal. Like that, one of the story is this. So, let's learn this chapter together. Can we? Yes. Let's start. Jaisa sawal, वैसा जवाब. However the question is, like that the answer. Sawal means question. Jawab means answer. बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था. King Akbar liked his minister Birbal very much. Badshah means king. Mantri means minister. Pasand means like. बीरबल के बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी. In front of Birbal's intelligence, even great people cannot do anything. Buddhi means intelligence or wisdom. इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे. Because of this reason, some courtiers were jealous of Birbal. Darbari means courtiers. Jalte means jealous. वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे. They were thinking some ways to make Birbal in trap. मुसीबत means trouble. फंसाने trap. तरीके means ideas. सोचते means think. अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था. Akbar had a special courtier named Khwaja Sara, and he was very proud of his knowledge and wisdom. Khas Darbari means a special courtier. Vidya means knowledge and Buddhi means wisdom. Abhiman means proud. बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझाते थे. He thought in front of Khwaja Sara, Birbal was a small child and a foolish. Nira balak means small child. Murkh means foolish. लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं. But what he thinks is not enough. दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नखार खाने में तूती की आवाज. While Birbal's words was influential for everyone, Khwaja Sara's words were irritating and upsetting for many. Nakhar khane means irritating or upsetting. Tuti bolti means influential voice. ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा
देते, लेकिन निकलवाते कैसे? Khwaja Sara wanted to throw out Birbal from India, but how can he? Nikalwa means throw out. एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए. One day, Khwaja Sahab was thinking some difficult questions to prove that Birbal is a foolish. Soch means think. मुश्किल प्रश्न means some difficult questions. उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के चक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा. He was confident that after hearing King's questions, Birbal will lost his courage, and even if he try 1,000,000 times, he will not able to give a satisfactory answer. Santoshjanak means satisfactory. Lakh means million. Vishwas means believe. फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है. Then Akbar will agree that in front of Khwaja Sara, Birbal was nothing. मान लेगा means agree. ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले. ख्वाजा साहब, wearing a long dress and a turban, and ran to Akbar by touching his bed and bowed his head and said, Achkan means long dress, pagdi पहनकर means wear a turban, दाढ़ी सहलाते touching his bed, सिर झुकाकर means bow his head. बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है. बीरबल is becoming very intelligent. बुद्धिमान means intelligent. आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं. You also get misleaded in Birbal's boasting talks. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले. Means I want you to ask my 3 questions to Birbal and measure his knowledge. उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी. His fake wisdom will come out. Nakli means fake. Akal Bahadur means wise man. ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा. Akbar agreed to Khwaja's request and called out for Birbal. Anurodh means request. Bulaya means called. Birbal. परब ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहता है. Birbal. The wise Khwaja Sahab
want you to ask 3 questions. क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? Can you answer them? बीरबल बोले, जहां पना. Birbal said, जहां पना. Jahan Pana means it is an Urdu word and used to address the Mughal kings. Jahan Pana is made of 2 words, means Jahan means world and Pana means shelter, or the one who gives shelter to the world. Zarur दूंगा, I will surely give. खुशी से पूछे, ask them happily. खुशी means happily. ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए. ख्वाजा साहब wrote the 3 questions and gave it to King Akbar. लिखकर means wrote. अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा. अकबर asked Birbal Khwaja's first question. पहला प्रश्न means first question. संसार का केंद्र कहाँ है? Where is the center of the world? संसार means world and केंद्र means center. बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया. Immediately, Birbal fixed the walking stick on the ground and said, Turant means immediately. Zameen means ground. Chhadi means stick. यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है. This point is equal distance to the 4 directions and the center of the world. यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दे कि मेरी बात गलत है. If Khwaja Sahab doesn't believe me, then he can measure the whole world with a rope or a tape. Then he can tell that I am wrong. Vishwas means believe. Feete means a rope or tape, the measuring tape. Napkar means measure. Galat means wrong. अकबर ने दूसरा प्रश्न किया. Akbar asked the second question. दूसरा प्रश्न means second question. आकाश में कितने तारे हैं? How many stars are there in the sky? आकाश means sky and तारे means stars. बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा. Birbal called out for a sheep and said, Bhed means sheep, mangwakar means ordered. इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं, उतने ही तारों आसमान में हैं. He told, the number of stars is same as
this the number of this sheep, the number of the hair on the sheep. ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले. If Khwaja Sahab has doubt in this also, then he can count the hair of the sheep and compare it to the number of stars. Tulna means compare, ginkar means count, sandeh means doubt. अब अकबर ने तीसरा सवाल किया. Now Akbar asked the third question. संसार की आबादी कितनी है? What is the population of this world? संसार means world and आबादी means population. बीरबल ने कहा. बीरबल से जहांपना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगी ही रहता है. He said that the population of this world keeps on changing every moment because in every moment some people die and some people gets born. Marna means die, जीना means born. इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है. If everyone, all people are together in one place, then we can count and say what is the actual population of this world. बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बो सिकोड़कर बोले. Means Akbar was happy with Birbal's answers, but Khwaja Sahab made a frown face and said, Naak boh means a frown face. Like we'll do like this. That is naak boh. ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब. These type of unclear answers are not accepted. Golmol means unclear. बीरबल बोले. बीरबल said, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं. These type of questions need these type of answers. पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए. First, prove my answers are wrong. Then you can proceed. ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना. ख्वाजा साहब could not say anything now. So, we have completed the chapter जैसा सवाल वैसा जवाब, and the next week I'll come with the next chapter. Till that, bye bye guys.